5 साल के बच्चे को क्या प्राइवेसी का इशू होगा अगर आप उसको बता के भी के एजुकेट करें कि ये आपकी बेहतरी के लिए है? सर एक्चुअली हम भी उसी एज से गुजरे हैं। हमारी जो सोसाइटी है, हम जो जिस माहौल में से निकले हैं, हमें पता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं। क्या 5 साल के बच्चे को लोग फोन देते हैं कि वो फोन लेके? सर फोन को तो अब पहली बात है कि 5 साल के बच्चे को शायद कोई अपनी बाहर ही नहीं जाने देता। सर इतना वो पेरेंट्स अपना मोबाइल देते हैं ना, वो कहते हैं, वो इंसिस्ट करता है कि मैंने ये मुझे चाहिए मोबाइल, क्योंकि मेरा खुद सर पर्सनली है कि मेरा एक भतीजा है, उसकी शायद एज 3.5 आवर्स एंड दे नो हाउ टू यूज द मोबाइल, हाउ टू ओपन यूट्यूब इन द मोबाइल। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि मैं हिडन के ऊपर क्यों थोड़ा सा एम्फेसिस दे रहा हूँ। यस, मैंने अर्लियर सुबह भी ये बात मेंशन की थी कि आई वाज इन्वॉल्व्ड एट अ टाइम वेयर आई वाज वर्किंग फॉर अ कंपनी विच वाज डेवलपिंग अ स्पाईवेयर। ठीक है, इसी किस्म का चीज़ थी वो, उसमें और भी बहुत से फीचर थे और वो यूके में चली और चलती रही। लेकिन जिस दिन यूएस में वो गई तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इंस्पेक्शन लिया, वेबसाइट को डाउन किया, सारा डाटा ले लिया और ऑनर को यूएस बुलाया, उसको $500,000 चार्ज किया, उसको जेल भेज दिया। ओके सर, ठीक है। सो व्हेन यू, और मसला ये नहीं है कि स्पाईवेयर, मसला ये है कि जब आप अपनी वेबसाइट पर लिख देते हैं ना कि ये हिडन है और कोई और बंदा इसको इंस्टॉल करेगा और आप उन्हें इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो आप बहुत सारी वायोलेशंस कर रहे हैं। प्राइवेसी एक चीज़ है, दूसरी आप जो यूज़र को इजाज़त नहीं दे रहे कि वो अपनी मर्ज़ी से इंस्टॉल अनइंस्टॉल करे। somebody else is trying somebody else's phone, ठीक है ना, इसमें लीगैलिटीज़ है काफ़ी सारी, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर दीज आर नॉट वेरी गुड थिंग्स, ठीक है ना। सो आई नो यू वांट टू ट्रैक द पर्सन, you want to track the salesman, you want to track people, but at least people should know, ठीक है, and the application should have their consent कि हाँ मैं ये यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। नो सर, एक्चुअली दिस जो प्रोजेक्ट हम जो कर रहे हैं ये एक कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके कर रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ इंटर्निस हैं, तो इंटर्निस उनके साथ हमने फिर ये प्रोजेक्ट डिस्कस किया था, तो उन्होंने कहा था वेल एंड गुड है, हम आपकी हेल्प करेंगे इसमें। किस कंट्री के लिए बनाया है सर? ये अभी फिलहाल पाकिस्तान में कर रहे हैं इंशाल्लाह, लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट। Are you comfortable naming the company? Yes sir. Are you comfortable naming the company with which you are working at? Devpel. Devpel. ठीक है, and who owns that? Awais Ali. Who owns the application being developed? Sir, we are owning. ठीक. Next. They are only guiding you. Yes sir. So feature of the projects that we are currently doing is SMS, calls, contacts, calendar, applications which are installed in their mobiles or your mobiles. Your location, live locations means where have you been last, that and gallery. Application से क्या मुराद है? Yes sir. Application से क्या मुराद है? सर जो आपके उस मोबाइल में एप्लीकेशंस हुई हैं, इंस्टॉल्ड है, आप उनमें से आप कहते हैं कि जी ये हमारे बच्चे के लिए हार्मफुल है, तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं बैकएंड पोर्टल से। पेरेंट्स कैन ब्लॉक दैट। तो वो इंस्टॉल नहीं होगी, अब वो यूज़ नहीं कर सकेगा? नहीं, वो यूज़ नहीं कर सकेगा। इंस्टॉल्ड होंगी वो? इंस्टॉल्ड सर इसमें काम करना पड़ेगा कि हमें या तो हम इसको अनइंस्टॉल कर दें या हम वो इंस्टॉल लें लेकिन वो यूज़ ना कर सके। इसके ऊपर आपने R&D की है कि आपकी एप्लीकेशन, चूँकि सारी एप्लीकेशन एंड्रॉइड बेस्ड है? यस सर, एंड्रॉइड बेस्ड है अभी फिलहाल। एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशन होती है ना, वो एक सैंड बॉक्स एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। सो उनको लिमिटेड एक्सेस होती है इन चीज़ों की कि दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर वो कुछ कर सकती हैं, यानी अगर किसी और एप्लीकेशन ने ऐसा इंटरफेस एक्सपोज किया हुआ है तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ दूसरी एप्लीकेशन में जो चीज़ मौजूद ही नहीं है वो आप अपनी एप्लीकेशन से उसको फोर्स नहीं करा सकते, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। यस सर, रिसर्च एप्लीकेशन को ऐसा कुछ करवा सकते हैं कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर दूसरी। सर यार हमें जो रिसर्च प्रॉब्लम्स होनी है वो एक ऐप्स में है और एक रिमोट कंट्रोल में है, क्योंकि इसको देखा ऑलरेडी? यस सर, ऑलरेडी देखा हुआ है, क्योंकि सर इसमें डिमॉन्स्ट्रेशंस भी थी, तो इसमें जो रिमोट कंट्रोल है उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, यानी कि कैमरा को इनेबल डिसेबल करना, आप उस कैमरा से पिक्चर टेक कर सकें विदाउट नोइंग हिम, वो आप सारा कुछ कर लेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारा पॉसिबल है। लेकिन जो ऊपर आपने चीज़ मेंशन किया ना, उसके ऊपर मुझे थोड़ी सी डाउट है कि वो आपने चेक किया कि नहीं। सर ऐप्स ब्लॉक कर सकते हैं,
ब्लॉक कर सकते हैं, ये सब ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि अगर जो इस ऐप इंस्टॉल हो रही है प्ले स्टोर से, अगर वो आपकी SMS कॉल्स दूसरी चीज़ों को एक्सेस कर सकती है, फॉर एग्जांपल अगर वो कुछ गेम है और वो आपके फेसबुक अकाउंट वो को इसलिए एक्सेस कर सकती है क्योंकि जो वो सारी ऐप्स हैं ना, उनकी परमिशंस होती हैं, यूज़र ने उनको एक्सेप्ट किया होता है। एक्सेप्ट जब किया। आप एप्लीकेशन अपनी इंस्टॉल करते हैं उसमें भी आप परमिशंस जब डालेंगे तो यूज़र को डायलॉग बॉक्स आएगा इंस्टॉलेशन, सर ठीक है। अब वो वाली एप्लीकेशंस ने इंटरफेसेस एक्सपोज किए हुए हैं कॉल रिकॉर्ड शेयर करने के, मैसेजिंग शेयर करने के, गैलरी शेयर करने के, ठीक है सर, ठीक है। लेकिन हो सकता है उनमें से किसी एप्लीकेशन ने ये इजाज़त ना दी हो कि आप मुझे ब्लॉक कर सकते हैं। मैं जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, ठीक है सर, ठीक है ना। जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपने इसके ऊपर कितनी रिसर्च की है। सर जो मैं वही बताने लगा, जब इंस्टॉल करेंगे ना हम उसको बताएंगे कि आप किस किस चीज़ की इनेबल एक्सेस कर रहे हैं बटन्स, जो ही हम उसको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, वो उस चीज़ का बताएगा कि आप किस किस चीज़ का एक्सेस ले रहे हैं उससे। टूल्स वी आर यूजिंग एंड्रॉइड Studio for Java to develop our application, PHP Storm, HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, jQuery, and MySQL for database. That's all. और आपकी डिस्ट्रीब्यूशन टीम की कैसे डेवलपमेंट में आपने किस एप्लीकेशन बनाई, आपने बैकएंड बनाया? No, सर ये फ्रंट एंड है, बैक एंड मेरा। फ्रंट एंड वेबसाइट का यस सर, और बैक एंड वेबसाइट का? बैक एंड और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। Can we see something? यस सर। Can we see something? सर सॉरी सर, फिलहाल अभी नहीं है। बना नहीं है या अभी नहीं है? सर बना हुआ है लेकिन अभी उस पर काम होना है तो अभी फास्ट है। क्विकली जस्ट आपका बिजनेस मॉडल क्या है? यस सर। बिजनेस मॉडल क्या है? हाउ आर यू प्लानिंग, और उसके अलावा आप हाउ आर यू प्लानिंग टू सेल इट? शुरू में फिलहाल हम इससे लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट लेके जाना चाह रहे हैं, तो शुरू में हम इसको फ्री देंगे फिलहाल, लेकिन बाद में इसकी फिर प्रीमियम और देखिए पब्लिक के लिए तो आप बना रहे हैं, आपकी ऑडियंस क्या है? सर ऑडियंस मेन जो हमारी ऑडियंस है वो पेरेंट्स है और कंपनीज हैं। अच्छा ठीक है, यानी पब्लिक है, ठीक है। तो उसमें यह है कि आप उनको फ्री देंगे, कंपनीज को भी फ्री देंगे? सर कंपनीज को अभी तो फिलहाल फ्री नहीं देंगे, सिर्फ पेरेंट्स, स्टार्टिंग पेरेंट्स को फ्री मिलेगी। बाकी जो अगर कंपनीज उसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो उन्हें वो प्रीमियम ऑर्डर्स करना पड़ेगा, क्योंकि फिर हम उसमें एक्सेस दे देंगे कि इतने आप एक्सेस उसकी कर सकते हैं फ्री अगर आपको चाहिए तो। अच्छा सही। How much is developed? सर फ्रंट एंड डेवलप्ड है। Nothing from the backend side? सर बैक एंड पे थोड़ा काम करना था, वो इंशाल्लाह। जब मैं इंस्टॉल करूंगा पहली मरतबा एप्लीकेशन, यस सर, तो क्या होगा? What would it do? How would it behave? Sir- पहली मरतबा एप्लीकेशन चलाने पे क्या होगा? सर आप सिर्फ डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद वो आपसे पूछेगा क्रिएट एन अकाउंट और लॉग इन ऑप्शन, यानी कि जो यूनिक आईडी आप इधर एंटर करेंगे वही यूनिक आप आईडी आप वेब पोर्टल पे जाके उससे लॉग इन करेंगे और आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं उसके डाटा को, और वो आपसे कुछ चीज़ें एक्टिवेट करने को कहेगा, यानी कि हम इसका नेम भी वो नहीं रख सकते, मीन्स इसका नेम डमी भी हो सकता है, like .com, .google, .service means Quick question on that. I started an application. I created my account और उसके बाद मैं एप्लीकेशन को क्लोज कर देता हूँ। यूज केस दोबारा बता देता हूँ। मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल की, लॉगिन किया। क्रिएट, आप जब क्रिएट का बटन ऐड करेंगे, क्लिक करेंगे तो वो उस वक्त आपका लॉगिन क्रिएट नहीं होगा, वो आपसे पहले वो एक्सेस मांगेगा सर। फाइन, उसने एक्सेस मांगी, जो भी आपको चीज़ रिक्वायर्ड है मैंने वो दे दी। यस सर। I started the application, created the account, and then I exited the application. I exit the application. ठीक है? यस सर। यहाँ से उठ के मैं बाहर जाता हूँ, मेरी लोकेशन ट्रैक होगी? नो सर, सर जब तक आप लॉगिन नहीं करेंगे आपकी वो ऑन नहीं होगी, क्योंकि उस चीज़ से पहले क्रिएट करने के बाद लॉगिन जब आपका होगा उसके मैंने लॉगिन कर लिया, मैंने लॉगिन कर लिया है, दोबारा मैंने लॉगिन कर लिया, आपको जो परमिशन चाहिए मैंने आपको ग्रांट कर दिया, ग्रांट कर दिया। अब मैंने एप्लीकेशन एग्जिट कर दी। यस सर। ठीक है, इंस्टॉल्ड है, इंस्टॉल्ड है। मैं यहाँ से उठ के बाहर जाता हूँ, ट्रैक हो रही है, फिर लोकेशन ट्रैक हो रही है। हाउ वुड यू डू दैट? सर इसकी आपको फिर वो सर इंटरनेट अवेल होना पड़ेगा। हाउ वुड यू डू दैट फ्रॉम ए कोड परस्पेक्टिव? क्या कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो? एक एप्लीकेशन तो चल नहीं रही। आई जस्ट वांट टू सी योर नॉलेज ऑफ दिस थिंग दैट यू आर बिल्डिंग। मैंने एप्लीकेशन चलाई और बंद कर दी, एप्लीकेशन इज नो मोर रनिंग, करेक्ट? यस सर। एप्लीकेशन तो वो बैकएंड है, वो हिडन है। वो चल, अब लोकेशन कैसे ट्रैक होगी? सर लोकेशन सर उसके लिए हम फिर वो इंटरनेट तो एक्सेस करेगा, इंटरनेट तो एक्सेस करेगा, लेकिन फॉरगेट अबाउट इंटरनेट, लोकेशन कैसे एक्सेस होगी फोन पे? सपोर्ट पीछे एप्लीकेशन चल रही है सर, एप्लीकेशन तो पीछे चलेगी, उसकी रन टाइम हो गई, वो रन टाइम पीछे है।
वो आपकी रन टाइम करेगी, लेकिन मैंने एग्जिट कर दी एप्लीकेशन. आई जस्ट वांट टू हियर अ पर्टिकुलर वर्ड मे बी. सर वो आपने हिडन है, आपने बैक कर दिया वो सर, उसका कोई काम नहीं. अब वो चल रही है, उसकी बैकएंड चल रही है, वो आपका सारा डाटा पीछे आपके वेब पोर्टल पे जो ही आप ऑनलाइन होंगे, ठीक है, वो आपका वेब पोर्टल पीछे आ जाएगा. थैंक यू. थैंक यू. Thank you so much, boys. That was an amazing idea. Now we have a soft announcement for you guys. That will be announced by Umar Aftab. So actually there is an announcement that जो offline request na project, judges are going to entertain that. They are actually going to see that project. They are going to evaluate the project after the show. Actually they're not going to do one live. They're going to do after the show. So उसको भी हम बाद में obviously we're going to check it out later. So, Yes. Coming up with the next theme, sky is the limit. You gotta be kidding me. Sky is the limit? Sky is the limit. I actually doubt that, right? No, exactly. Sky is the limit, and Let's see what they have to say today. exactly. So this is our next team. Sky is the limit. Best of luck. Over to you guys. इसको इसकी तरफ करके. हमारी तो नहीं स्लाइड है, ये हमारी नहीं स्लाइड. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Naveed Akhtar. And my group partner is Nawar. We develop a 3D printer using delta board technique. So ये स्लाइड है हमारी नहीं है, स्लाइड वो ऑन होती हैं. तो चेंज करें साइड. 3D प्रिंटर आप लेके आए सर? यस सर. जब तक आप सेटअप कर देते हैं. अच्छा. दोनों से ही आएगा. Sir, we developed the 3D delta board. We developed the delta board 3D printer using delta board technique, in which we use delta technique. There are many printers are available in market in Cartesian, which work in Cartesian pattern. X-axis, Y-axis and Z-axis are moved separately at runtime. In our delta board technique, X, Y, Z, Z-axis are जो X, Y, Z axis है. आपको बुलाया उन्होंने. अच्छा. Just introduce yourself. We are Sky. अच्छा ठीक है, ठीक है. So Here you go. That was the wrong thing. Excuse me. Here you go. Assalamu alaikum. Today the project we're going to be presenting is going to be Rebellious Assault, and the team name is Sky's the Limit, and my name is Najid, and I have Abdurrahman besides me as my team member. Yeah, you can say. Okay, sorry. Okay, firstly, what's the problem that we're going to be solving? First thing is that in today's world, we know that whenever, especially young generation, when they graduate, they usually have to work in teams and further. In universities, students don't usually work with random people. They work in teams with people who are already known to them. Basically, they're not working with any random peoples. And basically, the problem is that a lot of people today have issues working in teams. Mostly because people, you can say in a way that they are getting selfish, maybe in a way. That people usually have aims for themselves. They don't really aim for the team spirit these days. And for that, we're going to be seeing what solution we have come up with. Okay, firstly, project introduction. Basically, what we're doing is making a video game, a 3D video game for Windows 64-bit platform.
And how it's going to be doing, it's a shooter game, third-person shooter. The camera perspective for the user. It's a complete online multiplayer game to be played with everybody around the world through the internet. There's a player customization feature that we'll discuss. I'm going to intervene here. Based upon the number of third-person shooting games we've seen in lifetime, Yes. I want to see the game. Is it possible? Yes, sir. I do have a working prototype. Is it on the phone or? No. It's for PC. I have it in my laptop. Do you have a laptop? Yes, sir. Can you just turn it on? In the meanwhile, you just walk us through the slides, Okay. and somebody can. Now, basically, it's going to feature 3 different game modes, and we're going to come to that. Just move forward with the slides. Okay. यहाँ पे रुक जाओ. Okay. Okay, the different thing that we're पीछे actually... आइएगा जरा. The game will be featuring 3 game modes. ये boss training, free for all. Team mode, आगे चलें. Now, this is a basic depiction of how the team mode's gonna work. Now, what we want to do is basically the current games available out there with team modes. Players are usually expendable. The team members are expendable. Even if a team member dies, another player can carry on the objective. Now, what we want to do is basically what we're trying to do is teach the team members that every team member is important. That we want to basically persuade. I got the point. Nobody is supposed to die, right? Okay. Yes. आगे चलें. Not really, nobody's supposed to die. Basically, what the system does is, in the match start, a random player from a random team gets marked. Let's say, in this example, we have a player from team A got marked. ठीक है. Now, team A score will keep increasing with time, with the regular interval. Now, the team B objective is to take out that marked player, whereas team A, other members, is to protect that player. We want to say that a team member must protect other members, even if he's not contributing much to the overall team goal. Now, once the team B eliminates that specific marked player of the team, a random player from team B gets marked, and now team B scores gets increasing. So basically, we're trying to make the players non-expendables. The whole objective depends on the teamwork and how the team interacts with each other in the intercommunication. Dota खेली हुई है? Sir, try की थी लेकिन as such नहीं खेली. What are they trying to do in that? Tower defense? So in a way, how would that be any different? It's one common objective that we are all inclined to, yes, as sir. an entire team. If the tower collapses, we collapse as a team. So how would that be any different? Because of the difference in the play style. ठीक है. We're basically offering a third-person shooter. A lot of people are into MOBAs, which is the genre under which Dota falls. Just a little question. So, जो player marked है, वो game में क्या कर रहा है? So he has to defend himself as well. क्या कर रहा है? He has to defend himself as well. बस. But he is not killing anybody. It's up to him. He can kill anybody if he wants, but it's not really fun if you're just playing defensive and sitting at the back. Is it on? That's जब चल जाए तो आप आ जाइएगा, डायरेक्टली इधर आ जाइएगा. सर प्लीज कंटिन्यू. Okay, then these are one of the screenshots from the prototype that I've been working on. The third-person camera style basically shows that our character is actually visible to the user, and not the vision. We're not really experiencing what the character is saying. We're actually seeing the character from behind. And this is an example of marked player, how the marked player would be in the game, with just a player marker over the head. He has to insult him. Then our main player. You are the guy who developed this, correct? Yes, sir. And what did he do? He's currently working. सर मैं ए बोर्ड पे कभी करने बात कर रहा हूँ. मॉड्यूल है 3 मोड है ना. फॉर ऑल 3 मोड एंड ए बोर्ड. मैं ए बोर्ड पे. ठीक है. Okay, our basic objective is to promote teamwork and also help improve individual competitiveness. Now, one may wonder that how we can improve the individual competitiveness through game. Through scientific research, it has been proved that playing action shooter games can improve your decision-making skills. They can actually improve your response time, how you would react to the situation and your environment.
as well as scientific research also proves that it can help you overcome dyslexia and overcome depression faster. Then we want to bring the people from all around the world together at a single platform. We may actually think that social media is doing the same, but we can't really just go on into So what is your business model? आप इसको बस Play Store पे रख दोगे या? Yes, sir. Sorry, एक second. I'm sorry. Go back. I saw Unreal Engine over there. Yes, sir. एक मिनट रुक जाएगा. Microsoft Azure क्या कर रहा है? Sir, Microsoft Azure will be holding all the database for the player accounts. We have for the player accounts. For all the player accounts. Now it's an online multiplayer. Every player needs to have a player account for the game. कोई online service use नहीं करेंगे जो already? Sir, online subsystem हम Steam का use करते रहे हैं लेकिन वो सिर्फ match making के लिए. ठीक है. We have. Why GIMP? Yes, sir. Why GIMP? GIMP sir image editor है उसके लिए basically जो भी हमारा front end है. No, I just want to ask why GIMP? Why not Photoshop? Sir, GIMP is a freeware. Okay. So is Audacity. ठीक है. This is a basically business model. So why रुक सकता हूँ? एक सेकंड. एक पिछली slide. Yes, sir. This is basically just how. Stay here for a moment. ठीक है. The business model we're going to be following is the free-to-play game. It's going to be available on Steam since it's utilizing the Steam subsystem. The reason for choosing it to be free-to-play because majority of the gamers community is comprised of free-to-play players. The stats say that there are total around 2.3 billion players around the world, and out of that, only 1.1 billion are paying players. So we want to reach out to as many people as we can, and not just limit to just the playing players. That's why we're going to be using a free-to-play game with in-game microtransaction and purchases. So that not only that, where are you standing today in terms of development? कहाँ पे खड़े हो? I would say about 40 to 50%. We have a basic. There is no virtual currency right now. There are no premium. No, player sir, not yet. We haven't really. Have you built everything yourself? Yes, sir. In the game? In the game. Every single. We used basic models, 3D models. Some of the 3D models from Unreal. For example, the players